अच्छा जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या कहा हुआ है? फिगर 10.1 shows a wire passing through a hole in a horizontal plastic board. अच्छा, then the wire carries a current vertically upwards. अच्छा, ये ना भी बताया हो तो टर्मिनल्स देख के पता चल रहा है कि करंट अपवर्ड्स ही होगा, क्योंकि करंट होता है पॉजिटिव। ये करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स ना, तो अगर करंट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स, तो जहरी सी बात है उस वायर वाले पार्ट में से तो अपवर्ड्स ही होगा ना। तो ये यहाँ पे करंट हो जाएगा अपवर्ड्स, और अपवर्ड्स होने की वजह यह है कि करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स। सो ये हो गया करंट। अच्छा, अब और क्या पूछा हुआ है? A student moves a small compass around the board and plots the magnetic field lines due to the current. Draw the board as seen from the above and mark on it the magnetic field lines due to the current. तो बेसिकली आपने टॉप व्यू ड्रॉ करना है। टॉप व्यू के अंदर इट विल बी अ डॉट। क्यों डॉट? क्योंकि करंट इज आउट ऑफ द प्लेन ना। तो बेसिकली आप यूं समझ लें कि ये जो ए बी सी डी है, ये बोर्ड बना हुआ है 3D में। हमने इसको अब ड्रॉ करना है सिर्फ टॉप व्यू में। तो अगर हम इसको टॉप व्यू में ड्रॉ करते हैं तो ये ए, ये बी, सी और ये डी। अच्छा, अगर करंट होगा आउट ऑफ द प्लेन तो वो तो डॉट बनेगा ना। तो ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है करंट आउट ऑफ द प्लेन। और क्योंकि करंट आउट ऑफ द प्लेन है तो थंब होगा रूफ के टुवर्ड्स, और हमारी जो फिंगर्स हैं दे विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे जैसे हम वायर से अवे जाएंगे फील्ड वीक होता जाएगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग वीकर। ये हमने वीक होता हुआ फील्ड दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जी अगली बात पे। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चला? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, ये हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया बेसिकली। द करंट इज इंक्रीज्ड, डिस्क्राइब हाउ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर। जितना करंट ज्यादा होगा, जितना करंट हाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड हायर होगा। सो यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन करंट। So magnetic field strength has a direct proportion with the current. So we can say that increasing the current will increasing the current. So when we increase the current, magnetic field will become stronger. Increasing the current will make increasing the current will make the magnetic field stronger. So if we increase the current, the magnetic field will become stronger, and this is because magnetic field has strength of magnetic field has a direct proportion with the current. Now the next part. A 6-volt power supply produces a current of 8 ampere in the wire. Calculate the total resistance of the circuit. R equals V over I. We have
6 volt over 8 ampere, it's 3 by 4. So it's 0.75 ohms. And then you have the charge that flows through the circuit in 2 minutes. 2 minutes has 120 seconds, so Q is equal to I into T. The current is 8 ampere and 2 minutes has 120 seconds. So it will give us 960 and unit is coulombs. Now if we are moving on, the north pole of a bar magnet is held on the left hand side of the wire. South pole is held on the right hand side, as you can see. State the direction of magnetic field at the wire to these two poles. Magnetic field will be left to right, or you can say that it will be from north to south. Left to right भी ठीक होगा और north to south भी ठीक होगा. The wire is flexible. Describe the effect this magnetic field on the current carrying wire. So flexible means it will bend. It will bend in the direction of magnetic force. Now the wire has an upwards current. The wire has an upwards current. And this is the magnetic field in the wire. So this is magnetic field, this is current, and the force will be, one second. Magnetic field is not drawn correctly. Magnetic field is from left to right. So this is the magnetic field. Now, in the direction of magnetic field, we should keep index finger. So our index finger should be in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current. So thumb is outwards, or you can say that into the plane. So this is the direction of force. The wire will bend inwards towards the page, or you can say that away from the observer. The wire will bend. The wire will bend towards the, you can say that the wire will bend away from the observer. Away from the observer. As magnetic force. The wire will bend away from the observer as magnetic force is away from. Acha. As the magnetic field is away from the, magnetic force is away from the observer. The current in the wire is now reversed. State the effect of this on the wire. Now the force on the wire will be reversed and the wire will not bend into the plane, but now it will bend towards the observer. So we can say that reversing the current will reverse. Reversing current. हाँ जी, reversing current will reverse the. अच्छा, reversing current will reverse the direction of magnetic force. Now the wire will bend. Now the wire will bend outwards. So now the wire will bend outwards. Initially it will bending inwards. Direction of force will be reversed. That's why. Describe how this effect is put to use in a DC motor. In a DC motor, you have current carrying coil which pass through a magnetic field, and equal and opposite forces are developed at the two ends which cause rotation. So this is
how we use this effect in a motor. A current carrying coil. A current carrying coil is passed is passed through. So a current carrying coil is passed through a magnetic field that causes that causes equal and that causes equal and opposite forces. तो opposite forces at the edges to cause rotation. ये है जी कहानी.